Uttarakhand has now become the first state to implement Uniform Civil Code as the Uttarakhand Assembly has passed the UCC bill. The bill, which is a 192-page compendium of personal laws, will now govern the citizens of Uttarakhand. It will come into effect after the governor of Uttarakhand signs this bill. प्लीज सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था वो संकल्प लेने का दिन था 12 फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया। Akshit on the telecast with me. Akshit, big development in Uttarakhand, the first state to pass the UCC bill. Now the ball is in central government's court. Well, yes, in a big historical development now, the Uttarakhand government, which is led by, of course, Pushkar Singh Dhami, tabled the bill today only, and they have, of course, passed it in a special 4-day session. And, of course, as we know, the UCC bill proposes a common law on marriage, divorce, land, property, and inheritance for all the citizens, irrespective of their religion in the state, excluding the scheduled tribes. And if you just, just to be given a little bit perspective, then under the proposed UCC of Uttarakhand, of course, in 2024, living partners in the state must register their relationship with the district officials, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami, also mandated partners, residents or non-residents of Uttarakhand, to submit a statement of their relationship. And the bill also excludes, the registration of living relationships. So, of course, a lot of things are in the fray when it comes to UCC. Pushkar Singh Dhami also said that it's, of course, a historical moment where we got support, and it will definitely, have an impact on the national level, because this was also on the agenda. The BJP government and other union ministers also have stated that the consultation process was going on for a very long period of time, and now it has finally been passed in Uttarakhand. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.